अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। नमस्कार, सलाम अलैकुम। थैंक यू सर। आपको टीवी पे तो हम देखते रहते हैं और कई बार जो है मुझे ये भी मतलब हो जाता है कि मैं भी आपके साथ होती हूँ, फिर जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत संभल के फिर बोलना पड़ता है कि आप सामने तो कोई मैं गलत फिगर तो गलत चीज ना बोलूं। तो सर बहुत आपसे So सीखने you को are a मिलता very है respected person, and जी। we expect, कि कोई भी हो, we can agree, but we must be very respectful to each other. And in India, we have tremendous respect for you, and so we can go ahead with our program. No problems whatsoever. थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले तो हम बात करेंगे, ये पाकिस्तान में एक बार फिर कहा जा रहा है कि रॉ एजेंट्स इन्होंने कोई पकड़े हैं और जैसे कि यहाँ पे जो आप देख रहे थे पिछले दिनों किलिंग्स हो रही थी अननोन गनमैन करके, तो वो चीज भारत की तरफ इन्होंने बात की और ये भी कह रहे हैं कि जी हम अमेरिका से भी कहेंगे और अमेरिका से भी कहा जाएगा। सर आखिर ये क्या चल रहा है, आखिर ये क्यों दोनों कंट्रीज जो है वो पीसफुली नहीं रह पाती? आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? I think it is very very unfortunate. बहुत दुख होता है कि दो पड़ोसी जो कि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से रह सकते थे, उम्मीद की जाती थी कि शायद जैसे अमेरिका और कनाडा रहते हैं एक साथ रह करके, और उसी माफिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान रह सकते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि वेरी फैक्ट दैट religion was the cause of the creation of Pakistan. अगर religion cause ना होता पाकिस्तान बनने का, if it was say economic was the cause or any other cause कि भाई ये लाइन है, पहाड़ के उस तरफ पाकिस्तान होगा, पहाड़ के इस तरफ हिंदुस्तान होगा, या नदी के उस पार होगा, जैसे भी, मतलब नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन, तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आती, क्योंकि शुरू में ही वो हो गया, वो रिलीजन के ऊपर जब बंटवारा हो गया, अब वो दिक्कत आ गई, क्योंकि अब या तो फिर सारे के एक तरफ हो जाते, दूसरे दूसरी तरफ हो जाते, वो नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं इजराइल में क्या हो रहा है वैसे। सो आई थिंक द बेसिक कॉज ऑफ रिलीजन अनफॉर्चुनेटली, जो मजहब है वो सबको जोड़ना चाहिए, सबको, बिकॉज अगर मजहब का मकसद ही ये है प्यार एंड बीइंग एबल टू लिव टुगेदर, कीप रिलीजन आउट ऑफ पॉलिटिक्स, और ये दोनों अलग अलग विषय हैं। रिलीजन इज अ वेरी पर्सनल थिंग। शायद मैं भी मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो कभी भी, ठीक है, एवरीबडी इज गुड, वी बिलीव इन ह्यूमैनिटी, we respect humanity, we respect human beings, and we love and respect that. Religion does not this thing, but religion must bind people for good reasons. कि भाई हमने सबने ईमानदारी से रहना चाहिए, जवाबदारी से रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कमाई भी करनी चाहिए तो मेहनत की कमाई खानी चाहिए। सो इफ दैट इज, अगर वो मकसद है मजहब का, तो ठीक है। भाई एक दूसरे के पीछे for reasons which are absolutely have no meaning whatsoever, इसलिए दुख होता है। और यही कारण है कि आप देखिएगा, मैं देख रहा था फॉरेन सेक्रेटरी काजी साहब ने आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी जब भारत में रिपब्लिक डे मनाया जा रहा था 26 जनवरी को, तो उससे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये जबकि दो किलिंग्स जो वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिशियल किलिंग्स जो पाकिस्तान में हुई, वो उसमें हिंदुस्तानी एजेंट्स का रोल है, वो उनका कहना है। और मुझे लगता है ये जो टाइमिंग है, ये हुआ सितंबर अक्टूबर में, और अब जनवरी में आकर के इस तरीके से कहना, मुझे लगता है ये गलत है। और सियासत बिल्कुल, और खासकर जैसे पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल मुनीर, वो भी अमेरिका गए, अमेरिका से वापस आए, काफी उनका लंबा दौरा रहा उधर, एक हफ्ते के ऊपर। उसके क्या बातचीत थी वो ज्यादातर उसके बारे में बताया नहीं गया, कोई पब्लिसिटी नहीं, और वहां पर भी वो सबको मिले। वेरी फैक्ट दैट द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कुड मीट एवरीबॉडी इज इंडिकेटिव कि उनका जो एक मैं कहूंगा जो स्टेटस है वो बहुत ऊंचा है पाकिस्तान के अंदर, और उनके स्टेटस को अमेरिका भी रिस्पेक्ट करता है। यही कारण है कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मिल सकते हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को मिल सकते हैं, प्रेसिडेंट को मिल सकते हैं, सबको मिल सकते हैं, और सबको उनको ऑडियंस देता है, उनको बुलाता है, उनसे बातचीत करता है। तो यानी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एक बहुत बड़ा औहदा है
पाकिस्तान के अंदर, और आर्मी जो है वो लगातार 1947 अयूब खान से लेकर के आज तक आर्मी इज इन सम वे और द अदर कंट्रोलिंग, एंड अगर खुद डायरेक्ट कंट्रोल नहीं तो रिमोट कंट्रोल से, तो आर्मी का रोल है। अगर अभी जब इलेक्शंस होने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त जब नवाज शरीफ को वापस बुलाया गया है यूके से, ही वाज ऑन अ लॉन्ग, मैं कहूंगा कि वहां पे रहे, एंड आफ्टर दैट ही इज कम बैक, और उनको अब प्रधानमंत्री के लिए वो माना जाता है, ही विल virtually it is given that he is the next prime minister of Pakistan. Under these circumstances, it also must have been primarily army ki hi, मैं कहूंगा कि with the support of the army, otherwise he would not have come back. Would have been some international pressure also on the army that they have to accept him, and he would have to be called back, and Imran Khan has to be set aside and kept in his place. So वो सब कुछ जो भी है, whatever that is there, Pakistan's internal doing whatever it is, and of course the Chinese also are not able to help Pakistan right now economically. जितनी वो मदद सोचते थे, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार सोचती थी कि शायद चीन जो है, इतना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इतने सारे हाइडल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इतना सारा पाकिस्तान ने उनको मदद दी है, एक एक डिविजन लगा रखी है उनके सिर्फ सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, यकीन करने के लिए कि उनमें से कोई किलिंग्स ना हो जाए, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी और चीन के संबंध अलग है, और पाकिस्तानी जो आम आदमी है उसके संबंध चीनियों से अलग हैं। तो ऐसे इसमें काफी बार चीनियों का नुकसान होता है, मारे जाते हैं तो वो पसंद नहीं होता है, तो बाकी रुक जाता है। अमेरिका जो है उसका अगर जब तक एड ना आए, इकोनॉमिक एड कम्स फ्रॉम अमेरिका, और बहुत सालों से, रादर मैं कहूंगा सिंस अगस्त ऑफ 1947, पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन इंक्लाइंड टुवर्ड्स सीटो हो, सेंटो हो, अमेरिका हो, एवरीथिंग, इट्स द इंक्लिनेशन हैज ऑलवेज बीन दैट। सारे आर्मी ऑफिसर्स भी पाकिस्तान में जितने भी सीनियर रैंक में रहे, तो कोई ना कोई कोर्सेज अमेरिका में करते हैं, लंदन में करते हैं, फिर वो कोर्स करके, तो एक तरीके से देयर इज अ केमिस्ट्री which exists between America and Pakistan. भाषा एक है, अंग्रेजी में बोल सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, so there is a tremendous amount of chemistry, and America also sees Pakistan ये एक उनका ही एक आउटलेट है जो चीन के ऊपर निगरानी रख सकता है, या चीन के बारे में कुछ खबर उनको दे सकता है, या जो कुछ भी उनको करना है, तो and they have used also, Pakistan has been used by America to link up with China. माओ से तुंग से लेकर के अगर आप देखें from the time of Nixon only, किस प्रकार से पाकिस्तान ने मदद की अमेरिका की चीन को, उनको दोनों को मिलाने की, और उसका फायदा बाद में जब सोवियत यूनियन आया अफगानिस्तान में, उनको धकेलने से वहां पे क्या। सो पाकिस्तान हैज प्लेड अ रोल फॉर अमेरिका, Pakistan has played a role for China. Pakistan has been seen as something they can use for their own goods and benefits in this particular subcontinent and in South Asia. So ऐसे इसने पाकिस्तान, अब मुझे लगता है जैसे फॉरेन सेक्रेटरी ने इस तरह की बातें कही, एक तो two individuals, I think they said some Shahid Latif and Riaz Ahmed, two individuals, they accept, कम से कम पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने माना कि ये जो दो हैं ये पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, उनका जो किलिंग हुआ ये दोनों पाकिस्तानी नेशनल हैं। भारत ने उनको कई बार कहा कि एक का जो हाथ है, वन ऑफ देम इज एसोसिएटेड विद, लतीफ इज एसोसिएटेड जैश ए मोहम्मद, मसूद अजहर का है, एंड ही हैज डन व्हाट ही डिड एट पठानकोट, द अदर वन वाज इन्वॉल्व्ड इन द रजौरी किलिंग। सो हिंदुस्तान बार बार बता रहा है कि ये लोग हैं जो इनके संबंध हैं, और आज पाकिस्तान उस सितंबर अक्टूबर के किलिंग्स के बाद जो वो कह रहे हैं, जनवरी में आकर के वो स्टेटमेंट देते हैं, इज इंडिकेटिव कि कम से कम मेरे को लगता है कि टू इंडिविजुअल्स, अननोन इंडिविजुअल्स, जिसके बारे में किसी को जान पहचान नहीं, पता नहीं कौन है, लाखों लोग रोज मरते हैं, व्हाट इज टू इंडिविजुअल। If a foreign secretary has to hold a press conference and be able to state such a thing, there is something much more, much more. Either it has been prompted from maybe Canada, or it has been prompted from USA. Okay, if you also feel, then there's a little angle of Panoon and all these people also to these kind of killings that are. So you feel that एक तरीके से this is the right time to probably corner or have a narrative or दिखाने के लिए, but at least
Pakistan Foreign Secretary acknowledges that yes, there were two individuals who have died in Pakistan, killed in Pakistan in front of their respective mosques, and that he has not said, but India has given them that one belongs to Lashkar-e-Taiba and the other belongs to Jaish-e-Mohammed. Their connections are to such and such. The killings which had happened in Pathankot, one was instrumental for that, Arabi. And now probably, as I see, maybe Nawaz Sharif is coming back again on international pressure. They feel that Nawaz Sharif also is inclined towards India or has good relations with the Prime Minister of India. Prime Minister of India has made tremendous amount of, being nice to him, attended the granddaughter's wedding and wanted to mend fences with Pakistan. So Nawaz Sharif also acknowledged that Kargil was something which he was not aware of. उनको मालूम नहीं क्या हुआ कैसे हुआ. He was kept in the dark. Whatever Musharraf said and whatever they say. So there's a feeling in Pakistan that much that they wouldn't want him or they might want somebody else. But now that there is international pressure that Nawaz Sharif has to be brought back to Pakistan and he will get elected. He is the virtually a elected, whatever you might say, is the Prime Minister, next Prime Minister, and that he should not be seen. He should not be given a free hand for opening friendship with India. And therefore, अभी से हल्ला गल्ला शुरू कर दो कि नहीं जी नहीं हमारे यहाँ पे तो इनके एजेंट हैं इनके देखते हैं. So they put Nawaz Sharif on the back foot from day one or even day minus. Election से पहले ही जो भी सरकार आती है उनको बोलो the shots will be called by the Pakistan army, or whether you are being told by others that you will be the Prime Minister of this country, but हम हैं जो हम कंट्रोल करते हैं, हम करते आएंगे. If you think it otherwise, I'm sorry, you will not, you can't, but there's a limit to which you can go, but उसके बाद हम जाने नहीं देंगे आपको. So maybe there's a pressure on by Pakistan army through the foreign secretary or the new prime minister of Pakistan who will come कि भाई दूर रहो, अच्छा रहेगा. Or otherwise I find no reason. ये दो आदमी क्या कितने लोग मरते हैं. I don't understand how many, and nothing. ISI has been doing that. You can see if Osama bin Laden can be pampered and be looked after by the Pakistan army just a kilometer away from the Pakistan military academy. ये क्या दिखाता है कि बहुत ज्यादा ही पाकिस्तान, I don't know why Pakistan does what it is doing. It is getting too much involved into running something. I used to really like Sushma Swaraj when she used to keep saying, one of the this thing that all of India has done so much good in so many other fields. You only have been wanting to pamper terrorism. Stay away from it. Just stay away from it. And probably as people from the same subcontinent, we will all do well. Prosperity brings in good relationships between neighbors. 1% GDP बढ़ता है. 1% GDP. पूरा विश्व जो है वो 2.2 की GDP पे चल रहा है. 1% GDP just goes up if the neighbors are united and stand, even if they don't want to interfere with each other. अच्छे रहें. 1% GDP में फर्क पड़ता है जिसका फायदा सबको होता है. And 1% GDP is quite a bit. Now if India is a $3 trillion economy, India will hopefully become a $5 trillion economy in the next 5 to 7 years. इसका फायदा सबको होना चाहिए. After all, we are all neighbors. We should all benefit rather than अगर भारत ने आलू भी भेजने हैं पाकिस्तान को तो वो दुबई जाएंगे और दुबई से उठ करके फिर वो पाकिस्तान में. They can just go straight. But I think थोड़ी सी सोच, अच्छी सोच और वो नियत भी अच्छी होनी चाहिए. कहना very important is नियत. सर जो पहले आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा साहब, तो सर उन्होंने तो कहा था कि जो है वो 10-20 साल के लिए कश्मीर को भी भूल जाएं और इंडिया के साथ जो टर्म्स हैं वो बेहतर करें. अभी जो आर्मी चीफ आए हैं उनके आने के बाद भी हमने कोई खास ऐसा कोई नेगेटिव स्टेटमेंट फिलहाल देखा नहीं, लेकिन ये बात जरूर हुई है. तो इनके ऊपर एक प्रेशर भी है ना कि ये जो अननोन गनमैन वाला है, तो हो सकता है इसलिए इन्होंने कोई इस किस्म की बात कर दी हो. लेकिन दूसरी तरफ सर ईरान के साथ भी टेंशन बनी हुई है. ईरान के साथ भी आपने देखा कि पहले दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया, फिर अभी 9 लोग जो है वो मारे गए पाकिस्तानी. कैसे देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को? देखिए जल बाजवा थे,
he was, it appears to me that he wanted to mend fences with India. वो चाहते थे ceasefire, the various things, the steps that were taken, वो indicative कि yes, he's looking at something which can go. But वहां पे भी lobby होगी which would not want it. जो present chief of the army staff है वो भी बाजवा के ही I think on the same path that Bajwa was. He's also almost on similar path wanting. But there are प्रेशर्स विद इन प्रेशर्स. आप देखिएगा इमरान खान के वक्त किस प्रकार से कोर कमांडर्स लगातार सैक हुए बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ, सो देयर इज अनबन, मैं कहूंगा, विद इन दी पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ऑल्सो, एंड देयर चीफ ऑल्सो इज a little different mold. I see him as a good man, so let us see how he proves himself in the long run. But definitely a man, I hope that he's more professional in this thing. But then जब वो उस गद्दी में बैठता है आदमी, तो there are other factors that suddenly crop up. और आज की तारीख में मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से ये जो अटैक हुआ ईरान एंड पाकिस्तान के बीच में जो जबरदस्त टेंशन हुआ, सी ईरान हैज ऑलवेज बीन लुकिंग एट यूएसए एज एन एनिमी नंबर 1 or Israel. So Iran is not looking at them because after the nuclear treaty, जो उनको लगता है ईरान को कि after what was happening in ओबामा के वक्त जो न्यूक्लियर ट्रीटी आनी थी वो नहीं हो पाई, और उसके बाद से जो रिश्ते खराब हुए हैं ईरान के और यूएसए के बीच में, और अब जब बलूचिस्तान को लेकर के बार बार सिंध के बलूचिस्तान, the feeling is that yes, Pakistanis have been sponsoring some of the Sunni people to attack the Shias on the other side, and Iran feels that the Pakistanis have been grooming up some of these Baluchis and doing all this kind of so one cat calling the kettle black, because a very simple reason कि पाकिस्तान का मानना है कि बलूचिस्तान के अंदर जो भी हो रहा है उसमें ईरान का हाथ है, और ईरान को लगता है जो भी उनके बॉर्डर में हो रहा है उसमें पाकिस्तान का हाथ है. So there is a Sunni Shia angle between Iran and Pakistan. Then therefore at this point of time I don't think anybody would have even Iran, अगर ईरान ने इस तरह का हमला मिसाइल्स के साथ किया है, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है, under normal circumstances it would be seen something which is absolutely dangerous and at a flashpoint which should have gone beyond, or imagine then Pakistan surrounded by Afghanistan, which it is not in good terms with right now because of Taliban and Tehrik-e-Taliban, Pakistan having problems over there. The chief of the army staff of Pakistan admitting that Taliban is a nuisance and that Taliban has been supporting Tehrik-e-Taliban Pakistan. Taliban बार-बार कह रहा है कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है. But everybody understands that this is nothing but a militant organization propped up by Taliban or supported by Taliban, and of course the Pakhtuns in such large numbers who do not respect the Durand line between Afghanistan and Pakistan and come right up to Quetta and go beyond this thing. And Pakhtuns also have a sizable population in Karachi also. So there is a whole lot of mix-up. फिर पाकिस्तान ने सारे refugees को बाहर कर दिया. So that also irked तालिबान की इतने सारे लोग वापस हमारे यहाँ आ रहे हैं, पढ़ रहे थे, जो भी हो रहा था कम से कम. So there is a tension between Afghanistan and Pakistan. There is a tension between Iran and Pakistan. There is a tension between India and Pakistan. There is on-ground tension much that काफी बनामी दिखाते हैं between Pakistan and China, but जमीन के ऊपर चीनियों के बरखिलाफ पाकिस्तानियों के बीच में बड़ा आक्रोश है. So Pakistan is right now not in a very comfortable state, जिसके कारण उसकी इकोनॉमी पे असर हो रहा है. Fundamentalism is growing up. Then again, what is happening in Israel and Hamas, उधर भी पाकिस्तान is supposedly been Pakistan is reportedly supplying ammunition also to Ukraine. So ऐसे माहौल में Pakistan is in a catch-22, and then Pakistan says कि we are a nuclear is nothing. What can nuclear do? कुछ भी नहीं कर सकता है. So it is all है. It is something. It is like आपके पास 15 करोड़ का एक घर है, वो 15 करोड़ का घर है, इट्स ओके. उसकी कीमत तो तब होगी जब आप बेचेंगे तब उसकी कीमत आएगी ना. आपको उस घर के अंदर रहना है तो उस 15 करोड़ का घर है करके क्या फायदा है? इट इज ऑफ नो यूज whatsoever because it is a property which your grandfather or great grandfather whoever made it for maybe a few thousand something, today it may be 15 crore. कीमत बेचने के बाद है ना, अभी तो नहीं है. तो ऐसे हालात में पाकिस्तान is caught
because the fundamentalism in Pakistan, I always blame the religious heads जो हैं, who don't seem to propagate the right values. अगर ये मुल्लाज जो भी हैं, if they propagate the right values in individuals कि हमने ईमानदारी से रहना है, वफादारी से रहना, लेकिन बार बार नहीं हमने अपने मजहब के लिए लड़ना है, दूसरा काफिर है उसको काटना है, उसको मारना है, तभी I think this is what will it is everywhere. अगर आप देखिए Hamas, if they think they can throw Israel into the sea, it is impossible. If Israel thinks they can finish off Hamas, it is impossible. तो दोनों impossible है. एक ये Hamas भी जो सोच है फिलिस्तीनियों की वो नहीं मारी जा सकती, और अगर फिलिस्तीनी सोचते हैं हम इजराइल को नदी में फेंक देंगे, समुद्र में फेंक देंगे, कैसे फेंक पाएंगे? कोई भी नहीं. सो आई थिंक the thinking is incorrect. इस सोच को थोड़ा सा मुझे लगता है बदली करना पड़ेगा. We'll have to accept each other as good human being. And अगर आपको अगर लगता है मेरे बरखिलाफ कोई चीज गलत है, तो आपने बिल्कुल बातचीत करनी चाहिए, भाई ये गलत है, हमें पसंद नहीं है, आपकी मर्जी है, but we will not accept this nonsense from you because we think it is there. These are our proofs for whatever it is. इल्जाम लगाना एक दूसरे के ऊपर कोई फायदा नहीं है. That is how I look at it. नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है सर. लेकिन सर लास्ट में मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि एज आर्मी ऑफिसर आप जो रहे, मतलब इंडियन आर्मी में आप रहे, आपने 10-20 साल में पाकिस्तान आर्मी को जरूर स्टडी किया होगा, देखा होगा. आपको लगता है कुछ चेंज आया है पाकिस्तान की आर्मी में, एजेंसीज में पहले के मुकाबले में? ये अब लोगों को बात भी करने दे रहे हैं, लोग बहुत मतलब पब्लिक की बात कर रही हूँ, जो आम पब्लिक है वो भी अब जो है वो एजेंसीज और आर्मी के खिलाफ बात करने लगी है. इमरान खान के बाद से और ज्यादा ये चीज बढ़ गई है. आपको लगता है कि अब इनमें कुछ चेंज आया है, ये अब इस चीज को एक्सेप्ट करने लगे जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, या जो भी रीजन कहिए? पहले क्या होता था, द आर्मी was only an English speaking army in Pakistan. Everybody spoke English and they came from royal families. They had a lot of wealth, and they were generally wouldn't mind in having a glass of whiskey, or generally live well. Their children are studying in America, London, and all over the world, and they thought themselves to be royals and not Aam Aadmi. Over a period of time, obviously that has changed. It's no more that kind of a thing. Now you do find people who may find it difficult to speak in English. You will suddenly find people who are not very comfortable wanting to be what they are. They're quite proud of what they are. They are proud of being a Pakistani. They're proud of being, rustic, or even belonging to a poor family. It doesn't matter to them. They feel that by hard work, by sheer strength of their own brains, they have attained whatever they have attained. So they're proud of all that. And earlier also you found daadi nahi hoti thi. People dressed up like good soldiers, shaving, and absolutely they exhibited. They had those British systems which were. But now you suddenly find everybody has started having beard. You find that there's the English that most army officers spoke. It's like a game of cricket. In cricket earlier, you found everybody was talking only in English, and it was considered a game of royalty. अब धीरे धीरे पता चला सब जगह, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में, find that people who came from very, very lower strata of society, on their sheer strength and on their sheer talent. It is nothing to do with money. They came up because it was talent. That talent, it can only be nurtured and kept if there is respect in the society. The society respects people who have grown up by talent. पाकिस्तान में अभी भी वो नहीं हो पाता है. As I see, there is a feeling कि जैसे ही वो वर्दी डाल लेता है, he starts getting land. चाहे सूबेदार को इतनी जमीन मिली, कर्नल को इतनी जमीन मिली, then maybe a general को इतनी जमीन मिली. It doesn't happen in India. It doesn't really happen in India. मेरे को कोई भी नहीं जमीन देगा, ना मेरे को कोई घर देगा. You have to earn and you have to make it yourself. So it is nothing like. So in Pakistan, if you suddenly find there is poverty all around, and the army officers or all of them are having a plot of land in the defense colony or staying in Clifton Road and nice Rawalpindi cantonments and everywhere, living very, very well, obviously the man on the street is bound to feel, ये तो देखो, ये तो ऐश आराम कर रहे, ये तो आराम कर रहे, ये तो हमारे ऊपर हुकूमत चलाते हैं, ये तो. So he does not see them as amongst themselves. He sees them as someone different who's trying to rule over an ordinary Pakistani and kicking them. And this thing. So अभी मैं देख रहा था YouTube के ऊपर that ex foreign minister of yours,
he was giving a statement कि मेरे को जैसे मैं जेल से निकलूंगा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है so the police just quickly arrested him and shoved him into the vehicle and took him away. So you don't feel comfortable. You feel that देखो कल he was a great man and today he's been virtually kicked because of his attitude. So जो ऊंच नीच शुरू हो जाती है. I think Pakistan is facing that problem now. ऊंच नीच, even if you have a prime minister who has got say 6,000 acres of land or has a helipad to himself, has an aircraft to himself, it is very difficult. But मुझे लगता है कि maybe over a period of time in Pakistan, people accept कि भाई वो अमीर है तो वो अच्छा ही है, मतलब उसको सलाम करना है, which is not a good thing. In India, I find over a period of time that thing is gone. Now, if you are becoming, you'll have multimillionaires and billionaires who have become in the last 20 or 30 years or 40 years, sure on strength, sure on their brains, and they've grown up and become big. So there is no feeling कि ये ठीक है, if he was from the royal family at once upon a time, but if he can't prove आज, he's out. He might have his ancestral property to sustain him, but he's not amongst the people who count. So brains count and not what the cash count. So ये जो है पाकिस्तान में भी धीरे धीरे आएगी. It is not that it won't come. It will come in Pakistan also, where people will start respecting brains and they will respect people who have strength of their own. But if only this religion has to be kept away. Religion must not be an overriding factor. Other religion overriding factor होने से फिर थोड़ी सी दिक्कत मुझे ऐसे लगता है आती है, because religion is not bringing people closer. It seems to be dividing people, which is not a good thing. Religion must not divide people. Religion must bind people to take everybody along. But वो अगर पाकिस्तान में वो आ जाए, even though Pakistan is today 99% Muslims, why should there be fights amongst the Muslims only? Let's be honest, 99% are Muslims only. सब एक ही बिरादरी के हैं, सब एक जैसे, तब भी लड़ते रहते हैं. That means it is something more. So slowly, steadily, probably there will be a realization in Pakistanis also that what would matter in the long run are the brains. जो brains हैं पाकिस्तान के, वो तो सब लंदन चले गए, या तो फिर अमेरिका चले गए, या कनाडा चले गए, या वेस्ट एशिया में जाके. So all the brains are going out, and you find only the people who are left over are fighting amongst each other because the money is coming from abroad. Lot of money coming from abroad. So that also creates a lot of rift amongst the people. There should be some kind of या तो आप एक इस्तेमाल करो and then stick to it. So probably the Pakistan army also is feeling the pressure. After all, the army is from the society, ना, वो कोई बाहर से तो आए नहीं है, ये उसी सोसाइटी के लोग हैं. So उसी सोसाइटी के जब वो सब कुछ जानता है कि ये कल तक क्या था और आज ये बन गया, अब इसको देखो जी कितना बड़ा घर बना लिया इसने, कितना बड़ा अपना प्लॉट ले लिया इसने, और उसका परिवार. सर वो जो पहले एक रिस्पेक्ट थी, एक डर था सर, वो तो कम हो गया है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया. लोगों को सब पता लग गया है कि क्या हो रहा है, तो अब लोग उस तरह से ना तो डरते हैं और ना ही रिस्पेक्ट करते हैं. ये चीज मुझे तो लगता है बहुत हुआ है, चेंज हुआ है यहाँ पे. कोई शक नहीं आरजू जी, और होगा और होगा और होगा, because after all ultimately a man respects the other person for his knowledge, for his humility. अगर ये दो चीजें इंसान में हैं, आपके पास नॉलेज भी है और आप हम्बल भी है, anybody will respect you. There is nothing very great about it. If somebody in the class is scoring 10 out of 10 in maths, and if I'm getting 3 out of 10 in maths, I will always say that person, boy or a girl who's getting 10 out of 10 in maths is better than me because I'm only getting 3. He's getting 10. So I should not grudge him for his 10. I should rather learn from him and improve my score from 3 to 5 or 5 to 6 or get 10 out of 10, but not grudge him. तू कोई 10 out of 10 लिया या ये तो ठीक है. That should not happen. And that feeling, I think धीरे धीरे करके आएगा. आप अपना we have a lovely people. I have great regards for the people of our subcontinent because I always consider all of us are one. But if nobody should propagate something which is against humanity, and वो है terrorism. That terrorism is something which affects everybody, and it is bringing in a bad name to the country. It is bringing in a bad name to the people, and you don't feel comfortable. You should feel comfortable and proud
if today I step into USA or anywhere in Europe and I say I'm an Indian and he looks at my passport, he will not look at me with suspicion. ये पता नहीं इसमें क्या गड़बड़ है. He'll say, okay sir, can I help you? And if a moment I say I'm Afghani, I'm a Pakistani, वो बोलेगा will you please wait here? आप 2 मिनट बैठो इधर, मैं भी आता हूँ. और आधे घंटे तक आपको कोई देखेगा नहीं. Half an hour they'll keep you aside. और उसके बाद वो आपको बुलाएंगे, ये खोलो, वो खोलो, ऐसे करो, वैसे करो, 1000 सवाल पूछो कहाँ से. सो यू फील वेरी एम्बैरेस्ड कि देखो वो आदमी तो जिसका रंग मेरे जैसे ही था उसको जाने दिया और मेरे को रोक लिया इसने तो ये ठीक नहीं किया. दुख तो हो रहा है पर अब वो दुख की दवा भी नहीं है क्योंकि शक की कोई दवाई नहीं है. शक हो गया है, अब उसकी क्या दवा है? कोई दवा नहीं है. So it is better that we must rise and respect each other as good human beings, as good understanding of the knowledge, and be knowledgeable and respect one another, and not respect terrorism and propagate terrorism. मुझे अब लगता है ये जो अभी फॉरेन सेक्रेटरी काजी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, it was avoidable, totally avoidable, because coming at a time of Republic Day, दो आदमी जो कोई जानता भी नहीं कौन है शहीद लतीफ, पाकिस्तानी भी नहीं जानते होंगे कौन है रियाज अहमद या कौन है शहीद लतीफ, कोई नहीं जानता. यू सडनली होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ब्रिंग इट टू द नोटिस एंड एक्सेप्ट ये दोनों जी पाकिस्तानी हैं, हमारे बंधु हैं. अरे आपको मालूम है आपके दोनों बंधु एक लश्कर तैयबा से रखता है नाता और दूसरा जैश ए मोहम्मद से उसका रिश्ता है. अभी आप कह रहे. सो समवेयर आई थिंक we'll have to be a little more, careful in not unnecessarily pointing fingers at one another. It will not help either. It will not help either. सर हो सकता है टेंशन डाइवर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि ईरान की तरफ से जिस तरह से अटैक्स किए जा रहे हैं और सिलसिला चल रहा है तो उससे भी ये थोड़ा सा परेशान है. तो हो सकता है टेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं है. क्योंकि वही आप जैसे कह रहे हैं, हम दोनों को कोई जानता भी नहीं और जितने लोग जानते हैं उनको पता है कि वो किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के साथ थे. थैंक यू सो मच सर. बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू. Arzoo, always a pleasure. Thank you sir. Regards.